Good morning, all. Our esteemed guest, Dr. Angel, has joined us. Very good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Welcome. So, before handing over to Angel, ma'am, I would like to introduce ma'am a little. So, ma'am is the assistant professor in Central Institute of Educational Technology. Wait a second, please. Yes, I'm sorry for interruption. So, ma'am is working with CIET, NCERT. Ma'am is assistant professor there. She has a subject background in the discipline of mathematics, psychology, and education. Ma'am has PhD and MPhil in education and masters in mathematics and psychology, as I have mentioned. She has I would say she has expertise in the area of capacity building of pre-service teachers and leaders as well for integrating information and communication technology in the teaching learning process. And this is our topic of the workshop. Ma'am, we have given the name that 6-day pedagogical leadership for senior secondary school principals. She has served as a teacher, research associate, curriculum coordinator, principal in charge, and teacher educator as well. Her area of expertise, additional to the leadership and pre-service teacher, is education, ICT education, and ET. She is involved in development, training, research, and respect to ICT in education. So it is a long list which will take our time. So without wasting our time, because we are already 5 minutes late. So, ma'am, your experience and your work definitely will help our leaders in their like developing their school pedagogical annual plan. So today, ma'am will discuss with you the innovation in teaching learning process, the innovation in schools. So what NCERT, CIET और NCERT क्या कर रहे हैं, क्या उनकी प्रोग्रेस है, कैसे उन रिसोर्सेज को, उन चीजों को स्कूल्स में इस्तेमाल किया जाता है, व्हाट इज इनोवेटिव इन द फील्ड ऑफ आईसीटी. सो वी हैव सिलेक्टेड द आईसीटी बिकॉज अदर इनोवेशन हम बहुत बार बाकी ट्रेनिंग्स में डिस्कस करते हैं. सो थैंक यू डॉक्टर एंजल रत्नाबाई फॉर गिविंग योर टाइम, एंड नाउ इट इज ओवर टू यू एंड होपिंग अ ग्रेट एक्सपीरियंस विद यू. थैंक यू मैम, थैंक यू, ऑल द बेस्ट. Thank you so much. Thanks for this warm welcome and Sabiko Namaskar. I've been requested to be bilingual, but मेरा उतना अच्छा हिंदी नहीं आते हैं. So my English is very simple. So I think I'll be able to communicate with everyone on this topic. So the very first point which was told is about the innovations, what NCERT is doing, and how this can be taken as a pedagogical leader from this part. So that's something like we are just going to discuss a little about the various initiatives, but there will be more on how pedagogically we can bring in technology in our classrooms. I'm just trying to open my presentation. Just give me a minute. Whether my audio is clear? Yes, Angel ma'am, it is clear, and I would request to be bilingual for us, with us. Okay. Possible for you? I'll try my level best to. I know, that's why I didn't mention in the message, but we expect. So okay. please for us. Hope my morning to all of you. I am on the way to Ambala, so I just listen. I'll listen. Thank you, Anshula. ये आपका मेरा Angel ma'am, this was our HOD. I'm sorry, Anshu ma'am, we didn't saw that you have joined. We thought you are busy. So I'm apologizing to the ma'am and our deputy director, क्योंकि इससे पहले ma'am हम दूसरे link से जुड़े थे, which was from our link. So we have introduced you and welcomed you. So उस वक्त शायद नहीं थे, तो I welcome Dr. Madam Anshu Singla, HOD Teacher Education. So Angel ma'am, this was our HOD SCERT. Ji ma'am, thank you.
Thank you, ma'am. Madam, I know madam very well, so it's nice meeting you, ma'am, as well through this. Same here, ma'am. Same. I also seen your number name. That's why I joined. I should listen to you also. Thank you. Welcome, ma'am. Welcome to CIET, Haryana. Thank you, ma'am. एक्चुअली मैं ये सेशन फर्स्ट स्टार्ट कर देंगे थोड़ा टाइमलाइन का ऊपर सब ये एक्चुअली सभी का मालूम है बट जस्ट टू रिवाइज आवरसेल्फ ये यूज ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी इन इंडिया ये नया नहीं है ये एक्चुअली पुरानी 1972 से ही ज्यादा काम हमारा इंडिया से चल रहे सो सभी स्टेट्स भी ये इम्प्लीमेंट कर रहे हैं बट एक्चुअली इफ यू सी what kind of change it has been brought, what kind of innovation that has been brought in the recent days is what we are going to focus on. So I'm not going to explain everything because we know that from 1972 onwards technology हमारा country से हमारा state से ज़्यादा कम चल रहा है. But अभी last इधर से आप देख सकते हैं हमारा 2010 onwards 2010 का पहले एक्चुअली एक प्रोजेक्ट का टाइप ही चल गया बट 2010 ऑनवर्ड्स हमारा नीड बेस्ड इनोवेशन शुरू किया था 2010 से एक्चुअली ज्यादा सोचने के बाद हम एक पॉलिसी आ गया आईसीटी पॉलिसी बट ये ड्राफ्ट पॉलिसी है बाहर से नहीं रिलीज किया था बट वो पॉलिसी करने के टाइम ज्यादा सोचने के बाद अंडरस्टैंड किया देयर इज नीड फॉर लॉट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ कंटेंट बिकॉज 2010 का पहले भी हम ई कंटेंट डेवलप किया था डिजिटल का कंटेंट भी डेवलप किया एजुकेशनल कंटेंट डेवलप किया बट वो डिजिटली अवेलेबल नहीं है ज्यादा सीडी से डीवीडी से और टेप से अवेलेबल था सो 2010 का बाद एक्चुअली स्कूल्स का रीच एक्सेस करने के लिए टू रीच टू द ग्राउंड लेवल that is where the gap was formed so the very first innovative thought was started is like हमारा ई कंटेंट डेवलप करना है डिजिटल कंटेंट डेवलप करना है बट एक्सेसिबल होना चाहिए सभी का सो यही वजह ज्यादा इनिशिएटिव्स लास्ट 12 years से ज्यादा इनिशिएटिव्स है सो एक इनिशिएटिव था ई पाठशाला ये ई पाठशाला एक पोर्टल एज वेल एज एक मोबाइल ऐप था ई पाठशाला ऐप का ऊपर सभी एनसीईआरटी का कंटेंट मिलता है अदर कंटेंट्स नहीं मिलेंगे ई पाठशाला इज a portal only to disseminate NCERT का कंटेंट बिकॉज हम ज्यादा टाइम देखा था कुछ भी वर्कशॉप के लिए कौन भी आते हैं फर्स्ट लंच टाइम से पब्लिकेशन डिपार्टमेंट से जाते हैं कुछ भी बुक खरीदना है कुछ कंटेंट खरीदना है सभी एक्चुअली दे यूज टू परचेज पे एंड परचेज बट सभी का मालूम है एजुकेशनल गवर्नमेंट स्कूल के लिए ज्यादा फंड्स अवेलेबल नहीं है सभी परचेज करने के लिए वही आइडिया का ऊपर ये सभी इनिशिएटिव्स 2012 का बाद क्या क्या इनिशिएटिव्स आ गया सभी इनिशिएटिव का बेस है हम कंटेंट कोर्सेस कुछ भी देना है सभी फ्री देना पड़ेगा कुछ भी मनी नहीं चार्ज करना है सभी फ्री देना पड़ेगा एंड इट इज लाइक एक्सेस इट anywhere everywhere by anybody as well as without any charge यही हमारा विजन है ये विजन का ऊपर ही हम ज्यादा इनिशिएटिव्स ले लिया सो ई पाठशाला का ऐप का थ्रू पोर्टल का थ्रू सभी एनसीईआरटी का कंटेंट मिलता है बट ये सफिशिएंट नहीं है वही के लिए एक और प्रोजेक्ट शुरू किया था 2013 से बट 2015 से अच्छा इट टुक अप वेरी वेल व्हिच इज कॉल्ड एज नेशनल रिपोजिटरी फॉर ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ये शॉर्टली कॉल्ड एज NROER वो NROER क्या है बेसिकली इट्स अ प्लेटफॉर्म ये प्लेटफॉर्म से एनसीईआरटी का कंटेंट का अलावा सभी शेयर कर सकते हैं कौन का भी आपका पास एक्चुअली 10 कंटेंट 10 प्रेजेंटेशन है ये अच्छा यूज किया था एजुकेशनली इट कैन आल्सो बी शेयर्ड थ्रू दिस NROER अभी 2000 थोड़ा इयर्स का बाद इफ यू थिंक अबाउट इट ये NROER का कंट्रीब्यूशन भी डिफरेंट मोडालिटीज होना चाहिए anybody can just keep on dumping content it started becoming like all the content is coming to NCERT
So NCERT cannot alone manage all content. It's very challenging, and also सभी states का अलग-अलग need है, सभी states का अलग-अलग requirement है, सभी states का अलग-अलग languages है. So वो ये आइडिया का ऊपर 2017 से एक इनिशिएटिव रिलीज किया दीक्षा. मैं दीक्षा का आपका पोर्टल भी देखे शो करेंगे. ये दीक्षा कितना पसंद का मैक्सिमम एवरीवन नोस अबाउट इट, बट स्टिल ये दीक्षा का पोर्टल ऐसा बना दिया, ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर स्कूल एजुकेशन. सभी स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, ये ऐसा नहीं है ओनली एनसीईआरटी का कंटेंट, सभी स्टेट्स का इक्वल पार्टनरशिप है ये पोर्टल से. सभी स्टेट्स कंटेंट प्रिपेयर कर देंगे, शेयर कर देंगे, एक्सेस कर देंगे. So if you see here, this is right now one portal. NROER has taken the shape of Diksha now. So Diksha is considered to be one nation, one platform. So सभी कंटेंट एक ही प्लेटफॉर्म से मिलना चाहिए so that it's easier. So आप इधर से देख सकते हैं, इधर से नीचे मेजर सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशंस है, एनसीईआरटी का भी, सीबीएसई अभी एक बोर्ड है, एनआईओएस भी एक बोर्ड है. सो स्टेट्स के लिए सभी स्टेट्स का अलग अलग टेनेंट है. ये पोर्टल ऐसा था, इट्स लाइक अ वन हाउस विद मल्टीपल रूम्स, सो एवरी स्टेट हैज अ रूम. सो अभी हरियाणा से क्लिक कर देंगे एक्सप्लोर करने के लिए. So you can see that you will get a specific page where Haryana content is all uploaded. So आपका टेक्स्ट बुक हरियाणा क्या बुक यूज कर देंगे, वो टेक्स्ट बुक्स, ई टेक्स्ट बुक्स विद क्यूआर कोडेड भी मिलता है आपका, सभी आपका हरियाणा का कंटेंट. आप इधर देख सकते हैं ये बुक कौन अपलोड किया था, हरियाणा. ठीक है. सो आप मैं वापस आपका शो कर सकते हैं, लाइक बोर्ड से ना मैं एनसीईआरटी शो करेंगे. अभी मैं हरियाणा का पेज से है. So when I just select here any other state, or for example let me select CBSE, you will see all the content uploaded by CBSE. So ऐसा एक एक अलग अलग ग्रुप था, इधर देख सकते हैं आपका कंटेंट कौन अपलोड किया, ये सभी कंटेंट सीबीएसई अपलोड किया था. ठीक है. सो आप देख सकते हैं इधर इधर से सभी हरियाणा का कंटेंट, हम हरियाणा का एससीईआरटी एसएसए का नीचे कितना कंटेंट बना दिया, सभी कंटेंट आपका इधर से मिलता है. क्या क्या कंटेंट मिलता है, एक आपका है फर्स्ट डिजिटल टेक्स्ट बुक, सभी टेक्स्ट बुक्स मिलता है. एंड यू विल ऑल्सो गेट when you take any textbook, for example this is uploaded by Haryana, so I'm just opening the book and you can see chapter wise. ये chapter 1 है, ये happy child 3 little pigs. ये chapter का नीचे क्या क्या कंटेंट है, सभी कंटेंट आप इधर से देख सकते हैं. सो इधर उधर नहीं देखना चाहिए, एक चैप्टर का नीचे कितना कंटेंट आपका प्रिपेयर किया था, सभी कंटेंट आपका इधर से मिलता है. इधर से एक्सप्लेनेशन वीडियो भी है, वर्कशीट्स भी है, वीडियोस भी है, एक्सपीरियंशियल ये वाली से एक्चुअली कुछ कुछ छोटा मोटा रीडिंग मटेरियल भी है. ऐसा ज्यादा कंटेंट अवेलेबल है. एक एक चैप्टर का ऊपर क्या क्या कंटेंट चाहिए, सभी कंटेंट ऐसा ही अवेलेबल है. सो ऐसा you can use all the content which is available for every chapter. अभी आप सभी you are all school leaders. Because of being school leaders, one thing is that first of all making these content available to the teachers. So administrative leaders can make notice, just saying that like a circular that all of you start using Diksha. But as a pedagogical leader, what is our main aspect is how to use this content also need to be told to the teachers, because it's very important that अभी ज़्यादा content available है, but कैसा use करना है teachers के लिए, ज़्यादा teachers के लिए मालूम नहीं. So इधर से actually many schools do not have internet connectivity. So थोड़ा pedagogically side से भी हम context देखना पड़ेगा, ये content हम कैसा use कर सकते. So थोड़ा पेडागोजिकल लीडर्स का ऊपर नॉलेज होना चाहिए. ये टेक्नोलॉजी रिसोर्सेस इतना अवेलेबल है, हम कैसा स्कूल का अंदर लेके आना चाहिए. ठीक है. सो ये एक इम्पॉर्टेंट चीज है
which we need to bring it about. And Diksha is one of the portal now. It's the main portal through which you can access all the content. एक है digital content mapped to the textbook. दूसरा था, there are a lot of capacity building courses. Right now, professional development courses available है. आपका सभी का मालूम है, हमारे नेशनल पॉलिसी 2020 सजेस्ट करेंगे सभी टीचर्स 50 आवर्स कंपलसरी कैपेसिटी बिल्डिंग ट्रेनिंग लेना पड़ेगा. ये 50 आवर्स का ट्रेनिंग किधर से मिलता है? Where to give this 50 hours training? So NCERT has taken effort to bring out courses which is necessary for teachers and keep it in this Diksha portal itself. So for example, like I can show some courses for you. So courses access करने के लिए actually ये board select कर सकते, courses से जा सकते. आपका कितना courses available है, ऐसा नहीं है NCERT का course ही लेना है. सभी courses available है, कौन सा course चाहिए आप ले सकते. But otherwise you can also search. हम स्टेट का साथ हम NCERT से अभी सर्कुलर भी भेजा था. लास्ट 3 months we are running 5 courses. Like एक क्वेश्चन है एक्शन रिसर्च. सभी टीचर्स का मालूम होना चाहिए एक्शन रिसर्च क्या है, कैसा क्लास से एक्शन रिसर्च कर सकते. ये एक कोर्स है. एक ऐसा कोर्सेस का लिंक हम भेज देंगे यूजुअली. अभी बैचेस के वाले से अवेलेबल नहीं है. सो एक ही कोर्स से अवेलेबल है. So course actually date से open होता है, अभी batch available नहीं है. 31st March से ये course complete होता है. But you can see like this course was conducted from 20th December to 31st December. Sorry, 18th September to 31st December. This closed. Actually, enrollment is closed right now. That is why it is not allowing me to join the course. But this course is going to get over by 31st December. हम वापस sorry, this course has been completed already. Again, one more course has been open now till March 31st. So आप March 31st तक complete करने के बाद दूसरा course शुरू होता है. So April 1st से वापस this course will be started. So आप देख सकते हैं इधर से, like for example, this is our first 2-3 module है. टोटली 4 मॉड्यूल्स है. एक एक मॉड्यूल से अंदर ज्यादा रिसोर्सेस अवेलेबल है. एक वीडियो है, एक रीडिंग मटेरियल है, कुछ एक्टिविटीज है, असेसमेंट भी है, एडिशनल रिसोर्सेस है. सो ऐसा सेल्फ लर्निंग कोर्सेस भी अवेलेबल है. Very important aspect of a pedagogical leader. If you want innovation to happen, surely there should be updation of knowledge. To update the knowledge, it is not always possible for us to do trainings all the time. We cannot call for 5 days, 6 days, because leaving the school, leaving the classes, skipping away the schedule of the regular class and putting on the training becomes a challenge. So that is why online courses and online trainings are very, very useful for teachers to get updated with the new technologies. अभी आप देख सकते हैं ये 6 days course है. In the 6 days for yourself, you will be learning few things, but not everything can be learned. So how do you keep yourself updated? So how do we want our teachers to keep updated? एक और initiative NCERT किया था ये pandemic time से. सभी का मालूम है suddenly pandemic शुरू करने के बाद सभी teachers technology use करने के लिए force किया था. So we have forced the teachers to use it. But at that time, it's very difficult for teachers to know what to do. So if you go to CIET website, you can see there is something called as events. आप events का नीचे देख सकते 2 options है, 2 program में एक webinar. So this is, I'm just putting this link for your reference in the chat box also. So this webinar is for daily. If you go and see right now, we have finished around 538 sessions. ये क्या होता है? Every day 4 to 5 p.m. This is being done through our YouTube channel, and we already know that many teachers do not have internet connectivity. Okay, के लिए you can also see this program is also available through all these TV channels.
So every day 4 to 5 p.m. this happens through NCERT YouTube channel, and it also happens through all this TV channel. So 4 to 5 many times आपका school टाइम हो सकता है, मेरा एग्जैक्टली मालूम नहीं हरियाणा का स्कूल टाइम क्या है, बट समटाइम्स टीचर्स विल बी देयर इन स्कूल, लाइव से नहीं देख सकते, सो दे कैन डायरेक्टली गो टू द सेशन रिकॉर्डेड वीडियो and they can click on this video and watch the session by themselves whenever they are available. Abhi, how can a pedagogical leader initiate this in the school? ये NCERT का प्रोग्राम डेली चल रहे हैं, बट आप कैसा आपका स्कूल्स के अंदर ले सकते हैं, आप इधर देख सकते हैं. We have covered more than 200 plus digital softwares which can be used by the teachers for different classroom purposes, right? So we have started with, like, for example, like I'm just searching assessment का ऊपर आप देख सकते हो 172 सर्च रिजल्ट्स है, आप इधर से देख असेसमेंट में टाइप करेंगे. सो 30 सेशन से सभी का एक चैलेंज था असेसमेंट ऑनलाइन से कैसा कंडक्ट करना है. हम इधर से 30 डिफरेंट टूल्स मोर देन वी हैव कवर्ड. सो एक सैटरडे से और एक फ्राइडे से 1 घंटे आप क्लास टीचर्स के लिए पर्सनल डेवलपमेंट का अलॉट कर सकते हैं, और यू कैन ऑल्सो कीप इट लाइक ऑन द वीकेंड, लेट देम वॉच 1 वीडियो बिकॉज इट्स जस्ट 1 hour वीडियो. So let them watch this video and come and try to use it in the next month in the classroom. ऐसा slowly शुरू कर सकते. So this is a kind of a complete repository. आप किधर भी नहीं देखना चाहिए, ट्रेनिंग करना है कुछ टॉपिक से ऊपर. अभी मैथ्स टीचर्स के लिए बोलना चाहिए मैथ्स का कुछ भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक टूल यूज कर दो, वो डायरेक्टली आप इधर से जियोजेब्रा सर्च कर सकते हैं. इधर से वीडियोस हिंदी इंग्लिश के हिंदी मीडियम से भी है, इंग्लिश से भी है. सो आप ये वाली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा. ये वीडियो लिंक टीचर्स का बाद शेयर कर दीजिए. कैसा आप जियोजेब्रा यूज करेंगे मैथमेटिक्स टीचर्स का टीच करने के लिए, आप ये वीडियो देखने के बाद नेक्स्ट वीक से एटलीस्ट एक क्लास आप जियोजेब्रा क्लास ही यूज कर दो. ऐसा आप एक्चुअली थोड़ा ट्रेनिंग प्लान कर सकते. सेल्फ लर्निंग का ट्रेनिंग भी अच्छा हो सकता है ये रिसोर्स का ऊपर. दिस इज वन थिंग विच इज रेगुलरली हैपनिंग ऑन अ डेली बेसिस एक्सेप्ट वीकेंड्स. एवरी डे द ट्रेनिंग कंटिन्यूस हियर. ठीक है, ये वाले से हम थोड़ा स्ट्रीमलाइन किया था. अभी एवरी मंडे one of the state will share what initiatives are taken at the state level. So आप इधर से देख सकते 12th से एक्चुअली केरला शेयर किया था. लास्ट कमिंग वीक एक्चुअली हमारा ट्रेनिंग है, सो मंडे शेयरिंग नहीं था आज का, बट एक्चुअली एवरी मंडे एक स्टेट एक्चुअली ऐसा शेयर कर देंगे. सो आप इधर से देख सकते केरला भी शेयर किया था, कर्नाटका भी शेयर किया था, हरियाणा एक्चुअली अभी तक मैं सोचेंगे हरियाणा का स्लॉट नहीं आया अभी तक. सो एक वीक से एक एवरी मंडे. सो एज अ पेडागोजिकल लीडर आप कंपल्सरी ये सेशंस देखना चाहिए. आपका मालूम होगा क्या चल रहा है, हमारा कंट्री से क्या चल रहा है, कैसा स्कूल्स के लिए ये टेक्नोलॉजी यूज होता है, आपका इंफॉर्मेशन मिलता है. दूसरा है एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे. एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे हम एक सीरीज बंद कर देंगे, जर्नी ऑफ नेशनल आईसीटी अवार्ड. आप इधर से देख सकते 2010 से एक अवार्ड हैज बीन क्रिएटेड कॉल्ड नेशनल आईसीटी अवार्ड. टीचर्स कौन कौन अच्छा से टेक्नोलॉजी यूज करें, कुछ भी डिफरेंस करेंगे, वो टीचर्स के लिए गवर्नमेंट अवार्ड देंगे. It's like a national teacher award. So this is the award which is being given to teachers. So ये क्यों करेंगे, टीचर्स का एनकरेज करने के लिए. बट हम अभी देखा था ज्यादा स्कूल का रिप्रेजेंटेशन पार्टिसिपेशन ये वाले से नहीं है. So when we asked to people why people are not participating, many people do not know what is ICT award. वही के लिए हम अभी क्या करेंगे, एवरी ट्यूसडे एंड थर्सडे एक आईसीटी अवार्डी. अभी हमारा साथ अराउंड 170 आईसीटी अवार्डीज है. सो इतना लास्ट 2010 से 2019 तक
170 अवार्डीज का अवार्ड मिला. सो वो ICT अवार्डीज एक्चुअली वो स्टोरी शेयर कर देंगे, वो कैसा ICT क्लासरूम से यूज किया, वो कॉन्टेक्स्ट क्या है. ज्यादा ICT अवार्डीज का साथ एक्चुअली ज्यादा इक्विपमेंट्स नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, बट स्टिल हाउ डिड दे यूज टेक्नोलॉजी इन द क्लासरूम, क्या चेंज आ गया. सो आप एटलीस्ट एज अ लीडर इफ यू कैन शेयर दिस kind of information with teachers to motivate them. ज्यादा टीचर्स टेक्नोलॉजी क्यों नहीं यूज करेंगे, वो बोलेंगे क्लास से इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, मेरा ट्रेनिंग नहीं मिला. बट ये स्टोरीज जो ICT अवार्डीज का स्टोरीज है, टीचर्स के लिए ज्यादा मोटिवेट करते हैं. Motivation is very, very important for integrating or bringing innovation in technology in the classroom. टूल्स ज्यादा मालूम है बट मोटिवेशन नहीं है, कुछ भी नहीं चलता है क्लासरूम से. सो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ब्रिंग इट. सो मंडे state will share, Tuesday and Thursday ICT awardee sharing will be there, and every Wednesday एक नया टूल हम इंट्रोड्यूस करेंगे. सो आप इधर से देख सकते हैं कैसा फ्लिपिटी इज अ टूल, ये कैसा यूज करेंगे. आपका ज्यादा टीचर्स ही शेयर कर देंगे बिकॉज टीचर्स नो हाउ दे हैव यूज्ड. ज्यादा प्रिंसिपल्स भी ज्यादा टूल शेयर कर देंगे इधर से, कैसा वो क्लास स्कूल मैनेजमेंट भी किया था, अच्छा किया था टूल्स का यूज करने के बाद. सो देयर इज अ लॉट ऑफ शेयरिंग अबाउट द टूल्स. दिस इज वन ऑफ द रिसोर्स व्हिच NCERT is giving to for teachers and school heads to use it. And every Friday, आप every Friday देखेंगे इधर से साइबर सिक्योरिटी का ऊपर कंपलसरी सेशन चल रहा है. आप इधर आप टाइमलाइन से देख सकते हैं 2013 से एक करिकुलम रिलीज किया, ICT करिकुलम. ये ICT करिकुलम क्यों रिलीज किया, हम स्टूडेंट्स के लिए ICT का अंदर क्या क्या बोलना चाहिए, टीचर्स का ICT ट्रेनिंग देना चाहिए, क्या क्या ट्रेनिंग चाहिए, ये सभी डिस्क्रिप्शन ICT करिकुलम डॉक्यूमेंट से है. सो आप डायरेक्टली गूगल से ICT करिकुलम टाइप कर सकते हैं, आपका ये वेबसाइट मिलता है. ये हमारा NCERT का ICT करिकुलम का डेडिकेटेड वेबसाइट है, ये लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम भी है. आप इधर देख सकते हैं करिकुलम डॉक्यूमेंट, आप इधर से डाउनलोड कर सकते हैं. कुछ कोर्सेस अवेलेबल है बट हम इधर से लॉन्च नहीं किया अभी. ये सभी कोर्सेस अभी नेक्स्ट ईयर से दीक्षा से लॉन्च होता है. सो आप इधर से कुछ देख सकते हैं. इंडक्शन कोर्सेस है, आपका स्कूल से वेरी टीचर्स था. Some teachers do not even know basics of technology. Some teachers are in the next level. So teachers का कुछ भी नहीं मालूम है, इंडक्शन से शुरू होना चाहिए फर्स्ट लेवल. सो इधर से क्या क्या मालूम होगा, बेसिक, वेरी बेसिक फॉर अ टीचर. अब कंटेंट देखना है, सिंपली लॉग इन एज गेस्ट दे दीजिए. आप इधर से अंदर कंटेंट देख सकते, एक्टिविटीज देख सकते, ओनली यू कैन सबमिट असाइनमेंट. सो इफ यू वांट टू डू दिस ट्रेनिंग इन योर स्कूल, you can take our content and do the training for your school. So for example, you can see here 18 sessions hai with evaluation portfolio. So to see the content, there is no restriction. So first lesson, what is to be, what are they going to learn? आप कैसा ट्रेनिंग देना है वो भी इंस्ट्रक्शन है, आप क्या क्या बोलना चाहिए, what you have to do with all the, you have handouts also here which is linked with, you can see this handout, step by step instructions is given for a trainer. आप वेट नहीं करना NCERT से कौन भी ट्रेन कर देंगे, SCERT से कौन भी ट्रेन करना चाहे, ऐसा वेट नहीं करना. आपका स्कूल से कुछ एक टीचर अच्छा टीचर है वो भी ये कंटेंट ले सकते और दूसरा टीचर्स के लिए ट्रेनिंग कर सकते. बट आप लीडर है, आप लीडर ये वाली इनिशिएट करना चाहिए. ऐसा हम स्टेप बाय स्टेप. So I don't even know anything what to be trained. No problem. They can first learn from this. Then they can go and follow the instruction here. So you can see here, show the image and discuss what is communication. Discuss. So ये instruction है trainer के लिए, सभी instruction है. So instruction trainer के लिए दिया था. Trainer instruction देने के बाद क्या करना चाहिए? Teachers at least कुछ activities करना पड़ेगा. सो एक्टिविटीज के लिए भी हम लिस्ट ऑफ एक्टिविटीज ऑलरेडी दिया था, प्रैक्टिस एक्टिविटीज. ये सभी टीचर्स एक एक एक्टिविटी प्रैक्टिस करने के टाइम टीचर्स का स्किल सेट बड़ा होता है.
एंड आपका असेसमेंट करना है, सर्टिफिकेट करना है, असाइनमेंट भी हम दिया था, आप ये असाइनमेंट देख सकते हैं, आप टीचर सबमिट करने के लिए बोल सकते हैं। सो ऐसा कंप्लीट कंटेंट ये पोर्टल से अवेलेबल है। आप ट्रेनिंग करना चाहिए, इधर से आप कंटेंट ले सकते। ये इंडक्शन का कंटेंट है, आप टीचर्स कोर्स रेपोजिटरी से रिफ्रेशर भी देख सकते हैं। अभी ज्यादा कोर्सेस अवेलेबल नहीं है, ये शुरू किया था हम, सो अभी हम बिल्ड कर देंगे स्लोली, बट नेक्स्ट ईयर ये सभी कोर्सेस ऑनलाइन से दीक्षा पोर्टल से अवेलेबल होगा। सो टीचर्स का, लीडर का क्या काम है, व्हेन NCERT opens the course and announces the course, आपका टीचर्स के लिए शेयर कर सकते हैं ये डिटेल्स, एटलीस्ट मंथली और 2 months का वंस एक कोर्स कर दो ऑनलाइन से। सो ये हम एक्चुअली रिक्वायरमेंट का ऊपर एक कोर्स बना दिया, ये जेनरिक कोर्सेस नहीं है, ये सभी टेक्नोलॉजी यूज करने के लिए क्या क्या स्किल से टीचर्स के लिए चाहे वो ऊपर हम अभी बना देंगे ज्यादा कोर्सेस, राइट। सो ये एक इनिशिएटिव था ICT करिकुलम। सो हम दीक्षा के ऊपर ज्यादा देखा था, दीक्षा से कंटेंट भी अवेलेबल है, अभी कोर्सेस भी अवेलेबल है। ज्यादा टाइम ये टीचर्स के लिए ज्यादा आइडियाज नहीं मिलता है। आपका मौका मिला 6 days ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए, बट सभी प्रिंसिपल्स का ये मौका नहीं मिला। सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इज वी आर डूइंग 5 days ऑनलाइन ट्रेनिंग एवरी मंथ, which will be a certified training. So आप CIET वेबसाइट से डिटेल्स इवेंट्स का नीचे देख सकते हैं, वर्कशॉप एंड ट्रेनिंग। सो ये ओपन ट्रेनिंग्स है, एनीबडी कैन पार्टिसिपेट। आप इधर से देख सकते करंट एक्टिविटी, आज का शुरू हो रही ऑनलाइन ट्रेनिंग ऑन दीक्षा। ये 5 दिन का ट्रेनिंग होता है एवरी मंथ, लास्ट वीक ऑफ एवरी मंथ विल बी द ट्रेनिंग। सो दिस इज द ऑनलाइन ट्रेनिंग, आप इधर से देख सकते पहला लाइक अर्लियर ट्रेनिंग, इतना ट्रेनिंग हम दिस ईयर वी हैव डन दिस मेनी ट्रेनिंग्स। सो क्या होता है, आप सभी डिटेल्स इधर ही मिलता है, आप क्लिक कर दीजिए ये क्या ट्रेनिंग है, 5 days का सेशन क्या है, आप क्या करना है, कैसा पार्टिसिपेट करना है, आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म इधर था। देन एवरी डे 4 to 5 PM you can watch in our YouTube channel and you can also participate in our post session activity। आपका इधर से देख सकते, post session activity will start after the 5 days training। 1 month तक हम ओपन ही रखेंगे, आराम से एटलीस्ट 15-20 days टाइम दे देंगे, बिकॉज हम ये प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद इधर देख सकते हमारा ट्रेनिंग लिंक भी इधर ऐड होता है। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक, वॉच ऑल द 5 days session, participate in the activity, score 70% and you will get the certificate। So certificate आपका 5 दिन का वर्कशॉप का ऑनलाइन ट्रेनिंग का मिलता है सर्टिफिकेट। सो ऐसा आप थोड़ा ऑनलाइन से ही ट्रेनिंग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इधर से रेस्ट्रिक्शंस नहीं है। हमारा लास्ट ट्रेनिंग था, इधर से आप फीडबैक भी सबमिट कर सकते। हमारा लास्ट प्रोग्राम लास्ट मंथ का ट्रेनिंग था सोशल मीडिया फॉर एजुकेशन, कैसा सोशल मीडिया स्कूल से यूज कर सकते हैं एजुकेशन के लिए। लास्ट टाइम अराउंड 45,000 पीपल हैव अटेंडेड दिस ट्रेनिंग। आज डेट तक 18,000 टीचर्स हैव फिनिश्ड स्कोरिंग 70% ऑफ मार्क एंड गॉट सर्टिफिकेट। ऐसा टीचर्स का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है ऑनलाइन से ट्रेनिंग। आप वेट नहीं करना है स्टेट कंडक्ट करने के लिए, कौन भी कंडक्ट करने के लिए। ये क्यों हम ऑनलाइन से ये ट्रेनिंग शुरू किया था, ज्यादा टीचर्स का इंटरेस्ट है, मैं कुछ भी करना है, कुछ भी इनोवेशन करना है, कुछ भी यूज करना है, नया चीज यूज करना है, बट सभी टीचर्स का ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए मौका नहीं मिलता है। ओके के लिए एक प्रोग्राम हम शुरू किया था, एवरी मंथ 1 ट्रेनिंग। सो नेक्स्ट ईयर भी हम ये कंटिन्यू कर देंगे, एवरी मंथ 1 ट्रेनिंग। आप ये वाली इंफॉर्मेशन आपका टीचर से शेयर कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर देयर कंटिन्यूअस अपडेशन। Until and otherwise a teacher is updated with new technologies or new pedagogies, how do we expect innovation? Innovation will come only when they explore something new or new requirement comes. Maybe पुरानी ही है, idea पुरानी है, but requirement का ऊपर नया innovation बना दे,
right? So that is what we are trying to do through this. So this can be utilized by all the leaders to tell to the teachers as a pedagogically to make a difference in your classroom. First of all, teachers update hona chahiye, right? And if we see in this timeline, एक और चीज है हमारा इनोवेशन का ऊपर ज्यादा बात करने के टाइम आ रहे, ज्यादा ब्लेंडेड लर्निंग, इनोवेटिव पेडागोजीज क्या है, ब्लेंडेड अप्रोच फॉलो कर दो, मोबाइल लर्निंग फॉलो करना चाहिए, ऐसा ज्यादा आइडियाज आ रहे, ठीक है? सो हम थोड़ा वही के ऊपर एक्सप्लोर कर देंगे. चलिए, कुछ मेरा presentation is not open. I can just take images from internet and also speak about it. हम अभी इनोवेशन का ऊपर बात करने के टाइम एक इम्पोर्टेंट चीज होता है, थोड़ा हमारा प्लेस है, थोड़ा there is a little bit of internet issue, so मेरा इन 4 point touch है because I'll be explaining the other things. So ये एक मॉडल है स्मार्ट. So ये एक instructional designing का approach है. We can use it in our classroom when we integrate technology. हम usually what we do is we are using this first 2 levels, substitution and argumentation. आपका सभी का मालूम है. We are using chart as a learning resource for a long time. Earlier, we were insisting teachers to use chart. We are using handwritten notes for a long time. But अभी technology का intervention का बात हम क्या करेंगे? Chart का replace किया PowerPoint slides, right? Handwritten का material के लिए replace किया Word documents. इतनी हम किया था. So, एक level of technology usage is only substituting things. Earlier, now it is replaced in a digital form, right? ये ज़्यादा innovative नहीं. हम जैसा digital technologies use कर रहे हैं, इतनी कर रहे हैं, right? But the second level of using technology is argumentation. So, इधर से कैसा use करेंगे? For example, earlier notes से complete content लिखा था. अभी वर्ड टाइप से टाइप कर देंगे, सो वो सब्स्टिट्यूशन है. The next level of argumentation is you put that instead of using Microsoft Word, we use Google Drive, Google Docs. हम क्या करेंगे Google Docs से? अभी it's not just I'm typing, I can share that document with another 5 people who can also add content. हम simultaneously modify कर सकते. So थोड़ा functionality improvement किया. So this is the next level of using technology. आप substitution level से use कर सकते, argumentation level से भी use कर सकते. आज दिन से हमारा स्कूल से ज्यादा ये दोनों level ही हम technology use कर. थोड़ा argument किया था, थोड़ा functionality improve किया था. Earlier we used to write in diary and send information to parents. अभी हम क्या करेंगे? What are the various ways we are using to send information to parents now? Can you people, what are your schools following? Can you share? Can you write in the chat box? What are the different ways you are using in your school to send information to parents?
Or then you we can can send Google Forms. You are Google using Forms. Google Forms. Is it Google Forms for sending information or collecting information? For collecting information. So I want to know for what are the ways you are sending information. You want to tell to, earlier we used to diary and send, no? Diary we used to write that this is homework, this is what tomorrow is a parents meeting. So now what are the ways we are using? You can open your mic and speak. Through WhatsApp. through social media, through WhatsApp groups. WhatsApp groups. WhatsApp groups, Yes. okay. Any other means? Any other means, any other school which is using any other means of communication? And nowadays, effectively method is through WhatsApp. Only WhatsApp. Most of the schools. Yes. 99% of the schools are using WhatsApp, right? If not WhatsApp, very rarely people send mails to teacher parents because many parents do not know mail, how to use it. So we are using only WhatsApp and doing it. So what is the level we are using technology? Is it substitution or argumentation? In which level, if we are using WhatsApp for communication, which level of technology usage we are following in our school? Are we substituting the old method with some new method, or have we improved a functionality? Anyone? हम first level से ही है. Earlier we used to write in diary. Now we are writing digitally in the WhatsApp group message. That's all we are doing. So we are at the still just substitution level, right? Thoda time say like during this pandemic we started calling parents teachers meeting through online. एक Zoom call से और Google Meet call से ऐसा call हो गया. So there what we did is, some of the principals have called for such meeting, parent teachers Online meeting. medium. Online medium. So वो online medium से when you are calling teachers, वो क्या level है? Second level. Just argumenting. You are not just replacing. You are telling them to fill Google form. Madam was telling we are using Google form to collect the information. Right? आप एक ही time से, it's not just collecting information. In Google form you are also getting analytics. Right? कितना % सबमिट किया था, वो ज्यादा फंक्शनैलिटी का इंप्रूवमेंट. So ज्यादा principals as of during right now, all of us are using technology as a substitute of some older technology, or with improvement in some functionality we are augmenting the use of technology. But हमारा क्लास से innovation होने के लिए कितना तक हम जाना चाहते? What should be our level of using technology is modification and redefinition. So these are the two things, two levels of technology usage that can bring innovation in your class. ये क्या होता है? Modification क्या है? So I will explain this with a small example of coffee. सभी coffee पिएंगे? Everyone drinks coffee, right? Most of them. Haryana is mostly a tea drinking state, I guess. But कुछ सभी at least try किया था coffee. In our house, we make coffee at home, where we just add milk, sugar, coffee powder. This is the basic ingredients of coffee, right? हम घर से बनाने के लिए, it's just a quick 5 minutes or 10 minutes, maximum 15 minutes हम coffee बना देंगे, and we keep drinking the coffee. ये basic है. But of coffee day shop से चलो, कुछ coffee day or to any of this branded coffee shops. उधर से we can get the same coffee in our roadside tea shop for 5 rupees or 10 rupees. But when we go to coffee day or such any branded shop, what do they give us? Basic coffee का rate क्या है? Minimum 180 rupees, right? Basic coffee ka rate 180 hai. Same coffee, even you can get in the name of coffee, you get it in the shop also for 10 rupees.
So the very first level, what do they do is, instead of giving in a steel or kajes glass, they give it in a nice big paper cup with their logo, right? So many people go to coffee day not to drink coffee, but to just keep the coffee like that and take for one photograph that I have gone to coffee. Aisa hi chal rahe, right? So many times we are using technology like that. Instead of in my school using normal chart, I am using technology in my class. Itni hum show kar denge. So that's a first level of substitution. So instead of coffee content is same, but they just replace in a different container, which gives a better presentation. So many times technology is used in our schools like that, which is not really innovative, right? Which is not new. Content is same, only given in a different cup, right? But if you go to coffee day shop, the next level of coffee, when you ask is, you tell them, I want a latte coffee. I want a cappuccino coffee. When you very specifically tell what they do, they increase and decrease the decoction according to the requirement of the need required. Cappuccino, they make it more foamy milk. If they want latte, they make a strong coffee. हमारा घर से भी ऐसा होता है, light coffee, strong coffee, right? थोड़ा functionality change कर देंगे requirement का ऊपर. So same time when you go to shop also, ऐसा थोड़ा argument कर देंगे. Coffee का नाम coffee ही है, but थोड़ा argument कर देंगे requirement का ऊपर. Many times we use at the second level in the school also. What do we do in the school? Sometimes because the teacher is, parents are not having, not having video call, we are using WhatsApp and sending a recorded video through. We are calling WhatsApp call and connect. WhatsApp is not meant to conduct live class, right? But what are we doing? Sometimes we are conducting the session through WhatsApp call. So we are trying to use the available functionality. थोड़ा argument करेंगे, हमारा requirement का ऊपर हम use करेंगे. वो second level से usage है. But third level क्या है? Modification. When we see modification, many times we are trying to modify the concept of coffee. Like what we are saying, like coffee will be usually a hot beverage. But अभी क्या चल रहे? कोल्ड कॉफी है, आइस टी है. कॉफी का ऊपर आइसक्रीम डाल देंगे, राइट? कॉफी का आइसक्रीम कॉम्बिनेशन है और नहीं? Is it a coffee is drank for getting some energy usually? But now थोड़ा remodify किया था. नीचे hot coffee है, ऊपर थोड़ा आइसक्रीम डालो. आइसक्रीम खाने के बाद नीचे कॉफी कॉन्सेप्ट कॉफी, राइट? So, but थोड़ा modify किया था नया चीज बनाने के लिए. So just think about yourself. When you go to hotel, any menu is with a new name. We are interested to go and buy them. Something modified. हम instead of plain paratha, we stuff something and make it stuffed paratha, right? So ऐसा कुछ modify करने के बाद ये content ज़्यादा approachable होता है. That is why nowadays what we are doing, instead of just a digital book, which was earlier also PDF textbooks were there. Long back also PDF books were there. But हम क्या modify कर देंगे? PDF book का अंदर एक QR code डाल देंगे. अभी code का ऊपर हम scan करने के बाद video मिलता है, worksheet मिलता है, activities मिलेंगे, सभी मिल रहे. वो modification है. But the original is remaining. When you modify, original remains the same, but you are trying to bring a different in the learning. For example, online courses. Online courses is at the level of modification, right? But actually that doesn't change the concept of learning. Learning is there. Somebody is giving the knowledge, somebody is receiving the knowledge. वो third level of using technology है. Fourth level है, which is redefining. हमारा word से ही होगा, पुरानी क्या basic concept है वो completely define होगा. Coffee day से एक coffee मिलता है. They will keep at the bottom hot chocolate. In between coffee है. ऊपर actually थोड़ा jelly type का है. ऊपर समोसा भी डाल देंगे. Can you call that anymore a coffee?
In this whole cup, itna bada cup se itni hai coffee. But now the whole concept of coffee is redefined, which has multiple flavor. Hum technology use innovation when it will come is when we use technology and bring such different flavors into our classroom. ये करने के लिए क्या possibility है? If we just tell like instead of teacher teaching, I'm giving a video today to the people to just watch the video, then there is no innovation. If we tell that instead of teacher teaching in class, the same video will be recorded and it will be delivered in the name of a course, there won't be any innovation. So how we can bring innovation is by bringing in different technologies to our classroom. Like for example, there are lots of apps. I will show you like quickly 2-3 tools which you can use it in your classroom for free, which can help you to take your technology usage to the level of redefining. Okay. So one such software is Google Art and Culture. We all know that a field visit is one of the very useful tool that can be utilized in learning, but abhi pandemic ka upar zyada other options hai, because of that we are not able to really take them to the field visits. So this is one of the platform where you can take children for virtual tours. So for example, I'm just taking Ajanta as example. So you can basically install your mobile app of this. That will give you a real virtual tour effect, because I'm going to show in my laptop. In my system, it will not show. So whenever you have this symbol, it means it is a virtual tour. Okay? So abhi main open kar denge, because it is my desktop. I'm going to use arrow key to rotate. But when it is your mobile, आप left side turn करने के बाद आपका left side से आपका screens देख सकते हैं. Actually, our internet is very much slow today, so it's not visible here. So when you go to this, you will be able to explore that you can turn like this. So you can see like this is the whole view of a cake. Because of the internet, the quality of the content is very little dull. So when you have a good, you can see now, I can see the complete view of this cake. Because I'm using laptop system, I'm using the mouse and turning. But if you're using mobile app, ऐसा आप mobile से left turn कर देंगे, left side wall देख सकते हैं, right side turn करेंगे, right side wall देख सकते हैं, ऊपर lift कर देंगे, ऊपर wall देख ceiling देख सकते हैं. ऐसा you will get a complete feel of visiting. So this is one of the innovation. You are not replacing it, because it's not just you something which is physical, then you just replace it with digital. So here content is built which you can bring it for the students. So this will be an innovative way of bringing field trips into your classroom. So there are many other sites like this where you can use it for virtual tours. And in this, you can also watch many of the virtual tours to many museums. This is one of the sites for it. Okay. And there are subject specific tools like this, which can also help to use it in the classroom. So for example, I can use this one tool. Tool is simple, but this tool can be used by a teacher in all 4 levels. For example, I'm just taking this example. Maths teacher teaching in the class usually will draw a triangle, will just mark the angle, find out the sum and use it 180 degrees. So instead of drawing in board, the teacher can simply use like this and say that this is just the substitution level, which usually teachers do with the PowerPoint, right? But how we can make it more innovative in nature? The second level of using it is we always teach in the classroom. We'll tell the students like take 40 children are there. Every children will take a paper, cut a triangle and then cut their angles and then find out themselves, right? आप इधर देख सकते हैं ऐसा triangles इतना हम change कर सकते हैं. ये एक डायनामिक टूल है. सो इंडक्शन मेथड से एक
First triangle, it is true. Second triangle, it's true. Third triangle, it's true. Fourth triangle, it's true. For n number of triangles, any triangle you take, it is true. So that is also, we can teach this. The other way to, this is to teach. This is to, when your learning objective is to derive sum of interior angles is 180 degree, or to verify, like you can actually think about these two are two learning different learning outcomes. So learning outcome ka upar aap aisa tools use kar sakte. If you wanted to verify, usually we do paper cutting ka work bhi karenge. So this is also possible. So either dekhenge first, like I wanted to teach interior angles. So what I can do is I'm just sliding. So this is what we do in our classroom for paper cut, right? So paper cutting, instead of doing, which is not visible to all the students, I'm using this functionality and I'm trying to, what am I doing? I'm not just replacing it. I'm not substituting the paper cutting one. Using the functionality of this GeoGebra, I'm trying to make a animated clip out of it. So like this also we can use technology in our class, right? But when we talk about the level or higher level, there is another thing called Bhuvan, which is for social sciences. This is something, if we see, this is our government site, which also has, and there is one more called OLab. OLab is for science, which you can do. There is a lot of virtual experiments that can be done in OLab. So I'm just opening both the things parallelly so that we don't lose time. So ye actually Bhuvan ka website hai. You can actually, it's taking time to load the map. In this, you can teach many things in live manner. Like actually today, you wanted to see, instead of a telescope, there is no telescope in school. There is no nearby place where you can take your students. Then you can use tools like this. Instead of telescope, you can use your digital tools to see what is happening in the universe. So this is something that can be used. And OLab is a site where you can also take a lot of experiments. Our internet issue hai. Okay. So you can see here subject wise and everything, it's like given here. So you will be able to do all the experiments as per the class, because many schools do not have sufficient labs. Lab hai, nahi hai, or sufficient instruments nahi hai. So what we can do is a virtual lab activities can be given to a student to do it. Like for example, let us take any one just for a trial. So like we can see here, it's not just you will be doing, first of all, the theory is given here. Then how to do the experiment is also given, complete step-by-step process is given here. So then the simulator. So how to do it? So you can see here, this is a virtual lab. So you need to take like what material you want, like, and then like what diameter you need. All this you can set it up and keep this weight on here. It's like I'm not able to do it, but still like you will be able to do a complete virtual setup itself. So this is right now I'm showing online. So because of internet issues, it's not working, but this can be completely downloaded as an offline package for your school. You don't need to use it online. You can download it yourself for your school, and you register your school and then keep downloading the complete package, and you can use it freely. No money for it, nothing to be paid. And you can do this all virtual experiment. Even if the student doesn't know how to do it, they can watch this video how to do it. Complete actual lab experiment is recorded. There can be some check your understanding questions for them, additional reading material for this. So there are lots of content like this which can be utilized by students. So rather than just using what we have in the classroom, it's very important now a teacher to know how to use these tools in the classroom. Only when the teacher uses it appropriately in the classroom, we will be able to get the
results. So this is the Bhuvan one. You can see this is a dynamic map, globe. You can have several things. For example, if you want to say in your class, India's border was like, you can select political map also. So here, if you want to say earlier India was like this, now later or after partition, this is how India is marked. You can also add a layer. Over one India map, you can add another India map to show the difference and then keep shifting between one to another. You can also draw, measure, many things can be done in this tool. So these are some of the tools which I'm trying to show you to tell that technology can be used innovatively in our classroom for the next level. So last point I want to conclude is NCERT is doing online courses for class 9 to 12 students in the portal called Swayam. So this is not a replacement for your classroom teaching, but this is enrichment courses where students do not need to go again to a tuition center or something to revise after going to school, home. If they would like to revise lessons with the structured content, they can come to Swayam course portal and then they can do it. So to access all these course links, just go to CIET website. This will be a permanent place where you can keep seeing the updates of all this content. So it will be on CIET website. It's under resources. Under resources in CIET website, you will see that online courses for students where you will get, right now we are running 28 courses. So here you can see under resources, MOOCs on Swayam. So if you go to this page, you can see right now 28 courses are there. When you click on this particular course, you will be able to directly go to the course portal. So whenever these courses are going to get over, you can see the date, December 20th till May 31st, these courses will get over. So you will be able to go to the portal, join the course, and then the students can do on their own. Ultimately, there will be a test also where NCERT certifies the student. So this is something which can be brought as a blended learning in your classroom. For example, a teacher can choose the module, tell the student, you can register all your students. Even if your school wants to become a local chapter in our course, like for example, accountancy teacher in your school wants to register all the students and she wants to mentor the students in this course. So you can tell that to NCERT that I want to take this as a local chapter. I want to run this course in my class. So what will be the flexibility for that teacher is if a student wants to ask a question, this platform gives a space where they can ask questions, where the teacher can send, their teacher can update content, because every school's ka saath platform nahi. So teacher can, a school can, a single teacher cannot become local chapter. But if your school, like for example, I could see some of you, like you're working in a government higher secondary school. So if you want your teachers to utilize this and you want your school to be one of the part of this courses, you can write to us that I want to be a local chapter for running this courses in our school. So we will make you, we'll give you ID, password, you will be, the teacher will be made as a mentor, we will orient the school how to go about, and you can use this as part of your teaching. Not compulsory to only use this. Instead of teacher teaching some content, the teacher can tell the student to watch the video at home, come to the classroom for discussion. So this is one of the initiatives which NCERT has taken, which you can use it in the classroom. But when we are using all this, the very important thing is we should use open educational resources where Creative Commons license is given. So all the content which is there in Diksha on the Swayam portal and whatever initiatives I have spoken has content which is licensed under Creative Commons, which can be utilized by all of you free of cost for yourself. So I'll stop here. If there is any questions or any observations, we can take it. Good morning, ma'am. Yes, sir. Ma'am, as you had told some tools, Google Art and Culture, GeoGebra, OLabs, and Bhuvan 3D. Are there some tools for languages, Hindi, English, and Sanskrit, etc.? Sir, especially design like these tools. Sir, language tools are, language doesn't have really a content. Basically, yours is more of a skill based.
So there are a lot of generic tools which can be utilized for teaching languages, which is very, very appropriate. For example, there is one animation tool called Make My Show. Okay, so it is an animation tool. Make My Show. Okay, so there are several language tools. We have already given in our website one session completely on various tools that can be used for teaching English. So you can watch that session where you will get complete content on what are the various tools that is very much useful in English, that is given by an English teacher who is using technology for past 6-7 years. So that will give you a kind of a content how this tool can be used in English classes. So this is not only for English, you can use it for any language in that case. Right? Tools are sufficiently available, but innovation is how it has to be integrated into the pedagogical aspect. So as leaders, we need to really motivate teachers to keep updating their knowledge. And these are some of the platforms which principals can use it for motivating your teachers to do. Any other observations or would like to share something, ask something? No other queries? Hello, ma'am. Yes, ma'am. It was wonderful session delivered by you. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you so much. Any other observation? I ask the participants, please share. You want to know something more about something also, you can ask so that I can just tell where you can find those informations or how you can be connected with us on that. मैम CIET की वेबसाइट पे जो वेबिनार्स है वो कौन सी टैब के अंदर है? इवेंट्स का नीचे है सर. Sorry, ma'am. Sir, events. Okay, thank you. So today we are starting a 5 days online training on Diksha. So I request all of you, I know that you are already in 6 days training, but you can share the information to everyone in your school who can join us so that it will help them to know. Basically, today's training is on how to use all the resources available in Diksha in your classroom. So that's going to be this 5 days training all about. So any other queries or any observations? I'm giving the direct link for workshop page also because you can save it in your system if you require. So that whenever you feel like online trainings link. And also the webinar link. These two links kindly I request everyone to save it with you so that you will be able to use this for yourself. There is no other queries as such. I've also shared the digital initiatives presentation in the chat box. If anybody want to go through that, you can go through. It is in ascending mode. It will take some time to send so that network is having no problem. So otherwise also I'll share it with the coordinator. They'll be able to share it with all of you. Yes, ma'am. I think there is no other query from the participants. Okay. So
Thank you, ma'am. Thank you so much. As our head ma'am is in Ambala, she is on a visit, and still she is listening you and as with us, but due to the traffic and sound, she is not able to connect again. So, on behalf of School Leadership Academy, SCERT Haryana, and on behalf of our HOD Anshu Singla ma'am and Dr. Ashwini Vashis, the Nodal Officer of School Leadership Academy, we are very thankful to you, Angel ma'am, for your flawless and like excellent presentation. We are, even though me and even I would share one personal thing. I was sharing all the links with my husband. He is in some different sector. Let's see this. This is good for kids. I was also sharing the links and names with my bhatija hai. She is in 8th and upgraded in 9th. Let's see, this will help you. So ma'am, it was very helpful, very effective, and thank you so much for your time. And we are continue with trainings. So in next trainings, we definitely will expect more of your time. So please, thank you so much, ma'am. Thank you. On behalf of my participants also, they are very happy. I know it, but they take time and they are on duty also. So they are occupied somewhere else. And on behalf of my participants, thank you so much, ma'am. Thank you. Thank you, everyone. Thanks for being part of this session. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thanks for the organizers. Thank you. Thank you, ma'am. All the participants, मैंने जैसे पहले भी कहा था, जब भी आपको थोड़ा समय मिले, please make your cameras on. थोड़ा interactive होता है, थोड़ा अच्छा लगता है. And our next speaker has joined us. This is Dr. Kaushal Sharma, and sir is working in the Department of Hearing Impairment, Faculty of Special Education of Dr. Shakuntala Mishra, National Rehabilitation University, Lucknow. He was formerly associated as Associate Professor in Department of Special Needs Education. Ma'am, I request you to... Sudha ma'am, please mute yourself. Thank you. It's okay. And I continue. Sir was formerly associated as Associate Professor in Department of Special Needs Education in Addis Ababa University, Ethiopia. He has PhD, Special Need Education, and Master's degree in Special Education from MJP Rohilkhand University, India, with the specialization in education and rehabilitation of person with hearing impairment. He has been worked in the field for last 25 years and involved actively in various government and NGOs dealing with disability and rehabilitation issues. He has been assigned various important responsibilities in many universities and NGOs at national and international level. He has worked in different teachers training department and closely associated with the person with disability and their teachers in different teaching methodologies. He is also a resource person of various universities and colleges and with us also, with SCIET, Haryana and other departments. Additionally, he has participated and presented various papers in national and international seminars, conferences and workshops. He is the author and co-author of about 18 books dealing with various areas of special and general education. So he has a very vast experience in the field of special education and inclusive education. So for the topic, we have chosen our course of 6-day pedagogical leadership, that was creating an inclusive environment in schools. We had not any other option, like he is the best for it. So I request Dr. Kaushal Sharma. Hello. Hello. Yes, sir. Thank you, sir. So I request It's very good morning. It's nice to have it's very good morning to all of you. And I'm sorry that I'm late. I think it's not audible. You are not late. I was disturbing you little early because I think many of the participants is not
making their mics mute. So Sir, I think if it you is allow better. me, let me mute all of them, and when we start a discussion, I will allow them. Are you okay with it? If you feel. Yeah, definitely. Once we will finish the things, then we Yeah. will open the forum for the discussion. Okay, sir. Let me mute all for. I think now I'm Sir, audible to all of you. Unmute. Thank you, sir. Okay, sir. Thank you. It is over to you. Thank you, sir. Yeah. Thank you. So नमस्कार सभी पार्टिसिपेंट्स को। मुझे आज का जो टॉपिक दिया गया है इसमें क्रिएटिंग इंक्लूसिव एनवायरनमेंट इन द स्कूल्स एंड द रोल ऑफ प्रिंसिपल्स। बेसिकली ये हम लोगों का जो टाइटल है और जो टॉपिक है इस पे मैं जो भाषा अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, जो लैंग्वेज अभी इस्तेमाल कर रहा हूँ, मुझे लगता है कि शायद सभी के लिए ठीक रहेगी। बाइलिंगुअल रहूंगा मैं। कोई भी एक पार्टिसिपेंट अपना अनम्यूट करके मुझे एक बार बता दे कि ये ठीक रहेगा। यस सर। मेरी आवाज ठीक, थैंक यू। हम लोग सबसे पहले बात अपनी पूरी कर लेंगे, उसके बाद में मैं ओपन करूंगा सभी के लिए कि अगर आपको कोई सवाल, कोई क्वेरीज आपकी होंगी, सो यू बी मोस्ट वेलकम टू डिस्कस द थिंग्स। देखिए, जो बात हम लोग आज डिस्कस करना चाह रहे हैं कि इंक्लूजन में प्रिंसिपल का रोल क्या होगा, ये बात बड़ी अधूरी सी है, बड़े वेग लगती है कि प्रिंसिपल का रोल क्या होगा। अरे भाई, जो प्रिंसिपल का रोल हो सकता है एक स्कूल में, वही इंक्लूसिव में भी होना चाहिए, वही बाकी सब जगह में होना चाहिए। लेकिन सवाल यहाँ इस बात का होता है कि इंक्लूसिव सेटअप है क्या आखिर? हम किसे कहेंगे कि ये इंक्लूजन है? हम कैसे मान लें कि ये चीज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हम जिस स्कूल में पढ़ा